Hello students, welcome back to the class of psychology. So let's continue chapter number 7, human memory. Okay, so in previous module we studied about the different models of memory and sensory memory, short-term memory and long-term memory. So we studied that the short-term memory is now seen as consisting of more than one component, that is a working memory. In the same way, it is suggested that long-term memory too is not unitary because it contains a wide variety of information. So that's why there are different classifications of related to the long-term memory. Okay, so the one major classification within the LTM is that of uh, declarative and the procedural memory. Sometimes it is called as the non-declarative memory. The declarative memory, students, related to the information which is pertaining to facts, name, dates such as rickshaw has three wheels, India became independent on August 15, 1947. So these type of information are declarative in form. Okay, and the procedural memory related to the memory relating to procedure for accomplishing various tasks and skills such as how to ride a bicycle, how to make a tea, how to play basketball. So these fact uh, mm, the declarative memory related to the facts, names and dates, while procedural memory related to the processes, okay, which we require to accomplish a task. So facts retained in the declarative memory are amenable to verbal descriptions, okay, while contents of procedural memory cannot be described easily. So you can easily, students, you can easily describe the dates and the names and the declarative memory informations, but the procedural memory information is very hard to describe. Okay, it is very hard na कि आप how to make a tea, it is not easy to describe in words, so that's why it is amenable. Okay, now the another classification is conducted by Tulving. Okay, Tulving proposed it another classification and suggested that the declarative memory can either be episodic or semantic memory. Now, episodic memory, as the name suggests, contains biographical details of our lives. So, memory retaining to our personal life experiences constitute the episodic memory, and it is for the reason that its contents are generally emotional in nature. So it means that how you feel when you first go to your school. Okay, first went to school. Okay, your first day in school, और आपका आपके किसी फ्रेंड की आप किसी अपनी कज़न की मैरिज में गए हैं, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए हैं. सो दोज आर सम इवेंट्स, सम आर हैप्पी and pleasant, and some memories are painful and unpleasant. So all experiences of your life or incidents are the part of the episodic memory. The another is the semantic memory. Semantic memory is the memory of general awareness and knowledge. Okay, so all concepts, ideas and rules of logic are stored in the semantic memory. For example, the division formula, the multiply formula, okay, the spellings of anything, the codes of different cities, and many things which you studied because you स्टडीड ऑल दोज थिंग्स. एंड आप जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको आप बहुत ही डिटेल्स में आप लर्न करते हैं. सो दोज आर द सिमेंटिक मेमोरी of life. So semantic memory are basically our general awareness and our knowledge. Okay, so now students, the study of memory is a fascinating field, so that's why researchers have reported many new phenomena. So there is a new type of memory that is known as flash, another classification of memory. उसका first part है flash bulb memory. So flash bulb memories are like images frozen in memory and tied to particular places, dates and times. Students, this type of memory basically flashbulb memory ना basically use in eye witnesses. Okay, जो आई विटनेसेस होते हैं ट्रायल्स के केसेस के वहाँ पे यूज़ होती है. जो मेमोरी होती है वो स्टिक हो जाती है, जो प्लेस है, डेट है, टाइम है, वो एज इट इज़ हो जाता है. जैसे कि अभी हम उसको कभी भी याद करेंगे वो हम उसे भूल नहीं सकते, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं. सो दिस इज़ आर फ्लैश बल्ब मेमोरी, जो एक फ़ोटो की तरह क्लिक हो जाती है हमारी मेमोरी में. ओके, the another type of memory is the autobiographical memory. Autobiographical memory, these are the personal memories. They are not distributed evenly throughout our lives. Okay, because some periods in our life produce more memories or some periods
डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ मेमोरी। जैसे कि जो फर्स्ट 4 और 5 ईयर्स होते हैं हमारे चाइल्डहुड के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं बनती हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द चाइल्डहुड एमनीजिया। एमनीजिया रिलेटेड टू द लॉस ऑफ मेमोरी। ओके, सो जो फर्स्ट 4 और 5 होते हैं वो चाइल्डहुड अमनीजिया माना जाता है कि वो बचपन में हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को, बट आफ्टर दैट जो जितने भी ईयर्स होते हैं उसकी पूरी की पूरी मेमोरी हमें याद रहती है, हमारे साथ क्या क्या इवेंट्स हुए, इंसिडेंट्स हुए, जो कि मेमोरीज क्रिएट करते जाते हैं। सो दोज ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल memory. The another type of memory is the implicit memory. Implicit memory is a kind of memory that a person is not aware of, but it is a memory that is retrieved automatically. Students, this memory is just like the latent learning. Okay, मीन टू से हमने कब उस चीज़ को हमारी मेमोरी में जा चुकी है पर हमें नहीं पता होता, बट बस जब रिक्वायरमेंट होती है इट इज़ ऑटोमेटिकली रिट्रीव बाय अ पर्सन। ओके, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप क्लास में बैठे बैठे आप लोग लेक्चर सुन, फॉर एग्जांपल्स आप क्लास में बैठे बैठे मैम के लेक्चर सुनते रहते हैं, मैम ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी होती हैं, आपने उसे लर्न नहीं किया, आपने को उसको रिहर्स नहीं किया शॉर्ट टर्म मेमोरी में, आपको पता ही नहीं है कि वो कब आपकी मेमोरी में चली गई, बट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको सडनली वो चीज़ें याद आ जाती हैं, बिकॉज उसका उस टाइम को उसमें आप रिट्रीव कर लेते हैं उन मेमोरीज को ईजिली। सो दोज आर द implicit memory. Okay students, so thank you for this module. In another module we will study the another part of memory, that is the methods of memory measurement. Okay students, thank you.